everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 26th of October 2023. From today's newspaper, we'll be discussing these three important topics. The number one is about women, marriage, and labor market participation of the women. दैट मीन्स विमेन जो है वर्क के अंदर कितना पार्टिसिपेशन कर रही है एंड आफ्टर मैरिज व्हाट इज द थिंग्स व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग their work life because they are married. So basically, of today's topic, especially this topic, you can connect with the social issues, GS paper 1 and GS paper 2, right? या फिर आप उसको अपने essay writing, women is a common subject, topic, you must be prepared for the essay writing, या आप अपनी ethics के अंदर भी इसको connect कर सकते हैं. Then आपका second topic होगा urban cities and health, and third होगा about the white phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस जो है अभी इजराइल गाजा पैलेस्टीन ये जो वॉर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्हाइट फॉस्फोरस जो टर्म है वो यूज हुआ है. इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी लीगैलिटी क्या है, क्या इसका यूज लीगल है या नहीं है. अगेन आप इसको भी एथिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. नाउ starting with our discussion, the number one is women, marriage and labor market participation. When we talk about the women's labor market participation, it is often concomitant with the enhanced economic prospect and better household decision-making power. So here, the writer has started this editorial with a very positive note. As per the writer, women अगर labor market में participation कर रही है, अब यहाँ पे लेबर मार्केट का पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि ओनली दिस ये हथौड़ा उठा के या फिर आप किसी सीमेंट के अंदर लेबर का काम कर रहे हो. लेबर मतलब शी इज वर्किंग, राइट, शी इज अर्निंग. तो अगर विमेन का लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा. जिस घर को वो बिलोंग करती है वहां पे उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी एनहांस्ड होगा. she'll be able to contribute in the decision making. she'll be able to make decisions more appropriate manner, right? So from a macroeconomic standpoint, ये तो घर गृहस्थी तक की बात उन्होंने बता दी कि better household decision making होगी. Why? Because she will be aware that this thing costs this thing. कि इतना ये चीज जो है फ्रिज जो है इतने रुपए का आएगा, टीवी जो है इतने रुपए का आएगा, दैट मीन्स मुझे इतनी सेविंग करनी होगी, तब जाके हम ये कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फलाना. अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट के बारे में बात करें, अ डिमिनिश्ड लेवल ऑफ वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वुमेन्स इंट्रा एंड इंटर हाउसहोल्ड बार्गेनिंग पावर as well as the overall economic progress of the nation. आप इमेजिन करिए हमारा जो यूथ है जो कि काम करने के लायक है वो है मान लीजिए 1000, उसमें से हम एवरेज रेशियो ले लेते कि चलो 40 जो है वुमेन होगी और 60 जो है आपके पास मेन. कैन यू बिलीव कि अगर ये 40 वुमेन नौकरी कर ही नहीं रही है, कमा नहीं रही है, अर्न नहीं कर रही है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दे रही है, तो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कितना पीछे है. सपोज अगर ये भी कंट्रीब्यूट करती है इक्वली तो क्या हमारी कंट्री का इकोनॉमिक लेवल स्टेटस जो है वो बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा. There are still large differences between the women and men in terms of what they do, how they are remunerated and so on. I always give this example. अगर आप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हो तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा. When you go to school, आज की डेट में there are certain fundamental rights, directive principles, schemes या फिर a required condition to get married in a good house या कुछ भी मानो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कूलिंग तो सबकी हो रही है, गर्ल्स की भी हो रही है, बॉयज की भी हो रही है. नाउ इमेजिन, एक बार सोच के देखिए, जब the child is admitted in the school, the girls and boys are same.
And if the girls can connect, then boys will definitely connect. कि 10th standard तक, 12th standard तक, girls who were topper, like 10th class में girls were topper, 12th में भी मान लो कि girls topper है, topper नहीं भी है तो they were scoring good. But फिर जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता है, they lag behind. College भी गई, okay, they are scoring good. But after marriage, just imagine कि स्कूल कॉलेज के टाइम पे हमेशा से द गर्ल हु वाज डूइंग scoring good, who was the topper of the school, who was the sunshine of the school, she is just a housewife because she needs to look for her kids, she needs to look for her house. And the boy who was not scoring good, he's having a good package somewhere. This is the societal condition of women, women's labor market participation. एक वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा एक मीम वीडियो था जिसमें मैंने देखा था, आप कनेक्ट करेंगे, दैट देयर वर टू गर्ल्स एंड फ्यू बॉयज, they decided to have a get together after long college time. They all were studying in MBA, and after that they all were meeting after 5 6 years, and that MBA girl who was topper, her condition was same, like she's cooking in the kitchen for her friends and saying that, like, guys, food is ready. And those boys are discussing on the table about the share market, about the investments, about the money, or many things. So this is the gender perspective roles we need to change about the women, and it will definitely increase the women's participation in the labor market force. And these gender roles are inculcated in the men and the women from the very beginning of their birth. When a baby girl is born, she's been deliberately given the toys like the dolls, the house, the kitchen sets. If a baby boy is born, he's provided with the cars, like bikes, you play with this, right? So somehow our society inculcate in the mind that this is a role for the women and this is a role for the men, right? So I see there is a big difference between the women and the men in terms of what they do, how they're remunerated, and so on. Now let's look at the data which shows how labor participation is there. So globally, however, the level of female labor force participation remains relatively low. And it's not the case mostly with the index, but everywhere, right? So World Bank estimate 2022 show that the worldwide labor force participation for women was 47.3% in 2022. इतने रिमार्केबल एडवांसमेंट हुए पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज में, उसके बावजूद there has been a persistent decline in the labor force participation rate of women in developing nations. The estimations also indicate that female labor force between 1990 to 2022 has decreased from 28 to 24%. बहुत ही strange fact या data है ये कि जैसे जैसे we are advancing, the developing countries are more advancing, the participation of the women in the labor force is decreasing. ये डेटा देखो, पहले 28 था, अभी 24% रह गया है 1990 से 2022 का अगर डेटा देखें. So this fall has impeded their growth and hindered the ability to achieve their maximum capabilities. So a significant disparity in the labor market participation based on gender continues to persist worldwide. Economists, यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है गोल्डिन, 1994 में उनकी कुछ हाईलाइटेड रिपोर्ट्स थी, उसके अकॉर्डिंग the labor force participation rate of adult women with U-shaped पैटर्न को शो करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे. Further, this Golden added that initial decline in the participation rate is due to the movement of production from the household, family farm, and small business to the wider market to strong income effects. तो इनका क्या कहना है कि वो जो घर, all the families
if they are having a strong income effect, ये बहुत ही important factor है. You must have heard that आज भी if women are working, so they are being supported because inflation is too much. If both the parents will not work, तो आप बच्चों का जो खर्चा वो कैसे निकालोगे, है ना? How the expenditure you will deal to get a better life, both are working. But अगर the man is earning to that level that he single-handedly can afford every expenditure, then the woman is not working because she is being asked that there's no need to work for you. तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी चेंज करना पड़ेगा. आपने अच्छे खासे हाई इनकम स्टेटस वाले घर को देखा होगा, देश है कि हमारे घर की औरतों को काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है, क्या करेगी काम करके. So people need to understand that women need to work for themselves, for their own health, for their own potential to do something in their life for their own. It's not only because they are lacking with the money. So, but the income effect weakens and substitution effect standards at the same point. The issues made considerable dire when married women express a desire to participate in the labor market. After marriage, there is a tendency for women to decrease due to many variables. तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शादी के बाद औरतें जो है काम नहीं कर पाती हैं. For example, the educational attainment, less mobility as a result of increasing family obligations, societal disapproval association with women in employment. ये factors पढ़ने में बहुत छोटे लगे, but these are very real factors. For example, यहाँ पे लिखा है that the less mobility as a result of increasing family obligations. आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है. उस कॉम्पिटिशन के अंदर इतने सारे ऑब्लिगेशंस हैं और इतने सारे restrictions हैं that women is automatically not able to do it. For example, if someone is working in a private sector, so after marriage she has the obligation to find a job जो कि घर के आसपास, find a job जो आप सुबह जाके 3-4 बजे तक आ जाओ, find a job जिसमें आपको सैटरडे संडे की छुट्टी हो, find a job जिसमें आप घर भी संभाल सकते हो. That means the role of women घर संभालने का वो अभी भी हटाया नहीं जा रहा है. They are being put on an extra burden on them. So they are tired of performing two roles, right? The institution of marriage amplifies domestic obligations for women while concurrently imposing many social cultural impediments that affect the participation in the workforce. So multiple factors contribute to the diminished labor force, involvement of married women, or their proclivity to exit the labor field after marriage. एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है. There are women now, they are pretty much aware that they need to work. So after marriage, they work in any way. The educated women. But the big challenge for them is having a child. This is very severe, serious point. Having a child. To have a child or to look after a child, पूरी तरह से आपका करियर का दुश्मन. Initial 3 years आपको पूरी तरह से child पे देना है. फिर वो एज आ जाती है दैट यू नीड टू लुक आफ्टर टीनेज एज या फिर फलाना एज. एंड तो बेसिकली आपका करियर का एज जो है और ये जो है वो दोनों अपोजिट है, आप साथ में लेके नहीं चल पाते. और जेंडर रोल्स जो है आज भी स्पेसिफिक है. मैन डू नॉट पार्टिसिपेट टू रेज द चाइल्ड टू दैट लेवल एज वुमेन डज इन द हाउस. कुछ एक्सेप्शन है बट आज भी वुमेन उसको ज्यादा कर रही है. अल्टीमेटली टायर्ड होके क्या करती है, यू अपॉइंट अ नैनी और अ केयर टेकर. आप इस विशियस साइकिल को समझ पा रहे हो कि आपने जो बच्चे की देखभाल करने के लिए जो केयर टेकर मंगवाया है वो भी वुमेन ही है. यानी जेंडर रोल तो अभी भी चेंज हुआ ही नहीं है. इफ द मेन हेल्प अ बिट इन द हाउस, he changed the perspective of a gender role, that नहीं मैं घर में आपकी ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, right? I'm sure that 80% of the household after the baby, the life of men जो है उतना change नहीं होता. He goes to the parties, he goes for the meeting with friends, he chill out with the TV, Netflix series, everything. Life affects mostly of the women. Physically तो होता ही होता है, but work life का जो balance है. और एम्बिशियस औरतें होंगी तो वो क्या केयर टेकर रखेंगी. लेकिन इससे आप ये समझिए केयर टेकर इज अ वुमेन. सो अल्टीमेटली आज भी क्या देखा जा रहा है कि इट्स अ जेंडर रोल, कि इट्स अ वर्क ऑफ अ वुमेन ओनली.
So the labor and is as a result क्या हो रहा है? Many women are saying we don't want to have a kid. It's a burden. It's a burden on us. This is the trend which is going on nowadays, and it's completely in the wrong direction. So the labor market entry of women is influenced by a range of individual and societal factors. There are several, I'm sorry, there are several variables which are contributing to the limited participation rate. What are the other challenges? When women decide to resume their professional career after marriage, they tend to exhibit a preference for some employment जहाँ पे flexibility हो और जेंडर डिस्पैरिटीज भी होती है आपके पास पे स्केल्स है इनकम इनक्वालिटी ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है हमारी कंट्री तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वुमेन ऑफ द अपर स्ट्रैटा ये हम बात कर चुके हैं कि जो हायर कास्ट के लोग होते हैं दे जो कि अच्छी इनकम में है दे फील दैट यू डू नॉट need to work on this, right? So this is about the writer, what writer is trying to say on this end to. Now coming to the second topic, that is unhealthy urban India must get into street fight mode. तो यहाँ पे अर्बन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज है, चेन्नई ले लीजिए आप, ये जो अर्बन सिटीज है उनके बारे में बात हो रही है कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2035 तक एस्टिमेशन अनुमान लगाया जा रहा है 675 मिलियन तक पहुंच जाएगा. दैट इज द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. Although there is a widespread recognition that cities have been fueling India's rapid rise to the economic superpower status, almost all are feeling the inhabitants in the terms of delivering on health, environment and equity targets. अर्बन सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको वो लाइफस्टाइल चाहिए, बट ये सारी अर्बन सिटीज जो है हेल्थ के अंदर फेल कर रही है, एनवायरमेंट के अंदर फेल कर रही है, इक्विटी टारगेट में फेल कर रही है. अर्बन इंडियन मल्टीपल हेल्थ रिस्क, बहुत ही बुरे हाल है, ये तो रियलिटी है. लाइक अर्बन सिटीज में हेल्थ को लेके बहुत ही बुरे हाल है. एक रीजन कि वो खुद ध्यान नहीं दे रहे, जंक फूड चल रहा है, लाइफस्टाइल चल रहा है, सुट्टा चल रहा है, अल्कोहल चल रहा है, और जो ध्यान दे रहा है उनको चीजें मिल नहीं रही. दे ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल जो कि कंप्लीटली दवाइयों की है. दे हैविंग मिल्क प्रोडक्ट्स व्हिच इज कंप्लीटली इंजेक्टेड, राइट? सो इन लाइक एनवायरमेंट से जो नेचुरल रिसोर्स आप हेल्दी खा सकते हो वो आपको मिल नहीं रहे, और जो खा नहीं रहे उनकी अलग ही दुनिया चल रही है. So in many factors, there are multiple factors जिसमें health जो है सफर कर रहा है urban cities के अंदर. India's urban inhabitants experience the multi-scalar health risk जिसमें highest level of air और noise pollution है. दिल्ली में आप रह नहीं सकते हो सर्दियों में, ऐसे एयर पोल्यूशन है वहां पे. मुंबई जैसी सिटी में आपको नॉइज पोल्यूशन से परेशान हो रहा होगा, राइट? So the lack of greenery, lack of access to the sidewalks, the air pollution का contribution इतना ज्यादा है. This of the exposure dramatically magnifies the health risk for the heart disease, diabetes. गुजरात अभी गरबा का जो टाइम हो रहा था आपके पास नवरात्रि के टाइम पे, इसमें कितने हार्ट अटैक के केस है, छोटे छोटे मतलब यंग लोग हैं जिनको हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है. So addressing the diverse and multi-scale societal environmental infrastructure risk factors that contribute to the cardiometabolic risk in cities by transforming the design of built local environment as well as provisioning systems represent a new paradigm for the health. Now, double or triple the duty action. Okay, ये आप as a questions के फॉर्म में आप लिखिए. What are the steps? What are the steps government should take? Government should take as a result to create a balance, to create a balance between urbanization and health of the population. Health of the population. Okay. Now, white phosphorus. Legality of the white phosphorus. Recently, जो global human rights की organization है, that is the Amnesty International Human Rights Watch, have accused the Israeli Defense Forces of using the white phosphorus munitions in the Gaza and the Lebanon and violation of the international humanitarian law. तो सबसे पहले white phosphorus क्या होता है?
व्हाइट फॉस्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद इग्नाइट हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस थिक लाइट स्मोक और कम से कम 815, ये तो ज्यादा है, दैट इज सेल्सियस हीट तक ये आपको हीट प्रोवाइड करवाता है। तो पायरोफोरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो कि इजिली इग्नाइट हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। इसका ग्लोबल स्टेटस क्या बात करें, अंडर द ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन and labeling of the chemicals. They internationally agreed upon system to standardize the chemical hazard classification. White phosphorus falls under the pyrophoric solid categories 1, which includes the chemicals that catch fire spontaneously when exposed to the air. So it is among the most unstable of the pyrophoric substances. ठीक है, मिलिट्री यूजेस, व्हाइट फॉस्फोरस जो है आपके पास आर्टिलरी शेल्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स में डिस्पर्स किया जाता है। इट कुड बी आल्सो सोक्ड इन द केमिकल्स एज वेल। तो इसका प्राइमरी जो मिलिट्री यूज है वो है स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, जो ट्रूप का मूवमेंट है उससे हाइड करना। ठीक है, हार्मफुलनेस, ये कॉजेज सिवियर बर्न आफ्टर डाउन टू द बोन अपॉन एक्सपोजर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, इट कुड किल द लाइवस्टॉक एज वेल। तो क्या ये लीगल है? These are not under a blanket ban, complete blanket ban भी नहीं है, though their use is regulated under IHL. So this is a legal condition for this thing. इससे related आपके पास एक question आया था that with reference to the organization for the prohibition of the chemical weapon, consider the following statement. It is an organization of the European Union in working relation with the NATO and WHO. It monitors the chemical industry to prevent the new weapons from emerging. It provides assistance and protection to the states against the chemical weapons of threat. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 and 3 clearly. This is a question for you to deal. That is, recently the USA decided to support India's membership in a multilateral export control regime called the Australia Group. Please watch this thing, Australia Group. And the Wesseler arrangement. So what is the difference? Those are 11 का, ये बहुत पुराना current affair है, you must read about it. Okay. So this is it for today. Thank you so much. If you really like our videos, please do subscribe our channel ISW.